What a fine and pleasant morning today is. Today we are gathered here to celebrate our 75th Independence Day. So I would like to invite Father Rojant, manager and principal of Gujarati Medium, to hoist the national flag, the symbol of our pride and identity. एक साथ सलामी दो। हैंड्स डाउन। एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Good morning, fellow Indians. I welcome respected father, sister, teachers and all my dear friends as we celebrate our 75th Independence Day. India attained independence in the year 1947 after the struggle of several years. India paid heavy price to gain this independence. Our freedom fighters who were striving for freedom and organizing movements were imprisoned, tortured and bear many injustice, yet they never gave up. The Jawans and soldiers who accompanied them also lost their lives. Our great freedom fighter includes Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Sukhdev Singh, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh and many more who struggled for decades. It is the result of their zeal and dedication that the passion for nationalism didn't subside. They protected Sone Ki Chidiya, which refers to golden bird, which our nation was referred to as due to abundance of heritage and treasure. It is because of our freedom fighter that we breathe in an independent country. Every year, this day is celebrated by hoisting a tricolor not only in Delhi but in all state headquarters, schools, offices and government buildings. But this year, celebration is limited in the wake of coronavirus crisis. The celebration is shifted online due to coronavirus pandemic. Freedom is something which money cannot buy. It is the result of struggle of many great people. Hence, we should respect them today and always. At last, with freedom in mind, faith in words, pride in our soul, let's salute the nation on this auspicious day. Happy Independence Day, Jai Hind. Now it's time for an amazing dance performance by Manushri. So I would like to invite her on the stage.
performance. Now, I would like to call upon respected Avni Miss to share her message. આજે આપણે આપણો રાષ્ટ્રીય તહેવાર 15મી ઓગસ્ટ ઉજવી રહ્યા છીએ. 75માં આ વર્ષે હું આપ સર્વને, મારા ભારતીયોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. મને ભારતીય હોવાનો બહુ ગર્વ છે. મારા વિદ્યાર્થીઓને પણ હંમેશા ભારતીયત્વ શીખવું છું. તમે ડૉક્ટર બનો, તમે એન્જિનિયર બનો, વકીલ કે શિક્ષક બનો, પરંતુ સૌપ્રથમ તમે ભારતીય બનો. સવારે ઉઠો અને આંખ સમક્ષ એક જ ધ્યેય રાખો કે હું મારા ભારત માટે શું કરી શકું. હું હિન્દુ નથી કે હું મુસલમાન નથી, હું સૌપ્રથમ ભારતીય છું અને એટલા માટે જ જરૂરી છે કે હું ભારત માટે શું કરી શકું. જરૂરી એ નથી કે રોજ બંદૂક લઈ અને બોર્ડર ઉપર જવું. જરૂરી છે કે મારો ભારત દેશ કેવી રીતે સ્વચ્છ બને. જરૂરી છે મારો ભારત દેશ કેવી રીતે વિકાસ કરે. તો આવો આપણે આજે આ રાષ્ટ્રીય તહેવારે આ 15 ઓગસ્ટે પ્રણ લઈએ કે હું મારા દેશને સ્વર્ગ સમાન બનાવીશ. તું જિંદા હૈ તો જિંદગી की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर. तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर. जय हिंद. Wow, what a heart-touching message. Now, I would like to call upon Krupa Rathod to dedicate a song, Teri Mitti, in honor of Indian Army. ओ रांझना वे तेरी सांस
what a beautiful song. Now, I would like to call upon Krishna Miss to share her message. आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक पर्व है। 15 अगस्त का यह पावन दिन हमें वीरों की याद दिलाता है, शहीद हुए जो देश के खातिर उनकी कथा सुनाता है। हमें अपने भारतीय होने का गर्व होना चाहिए कि हम आज़ाद भारत की भूमि में पैदा हुए हैं। भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ ब्रिटिश सेना में काम करने वाले मंगल पांडे ने उठाई थी। हम सब कभी भी उन भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आज़ाद को कभी नहीं भूल पाएंगे, जिन्होंने बहुत कम उम्र में देश के खातिर अपनी जान गंवा दी। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने भारतीयों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। वो एकमात्र ही ऐसे नेता थे जिन्होंने अहिंसा के रास्ते से हमें आज़ादी दिलाई। और अंततः 15 अगस्त 1947 का वो दिन आया जब भारत को गुलामी की मजबूत बेड़ियों से आज़ादी मिली। नमन है उन वीरों को जिन्होंने देश को बचाया है, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया है और भारत को है आज़ाद कराया है। तब से लेकर आज तक हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए हैं। हम हर साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से तिरंगा फहराया जाता है। दोस्तों, आज़ादी से लेकर आज तक हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है। हमारा देश तेजी से तकनीकी, शिक्षा, खेल, वित्त और कई दूसरे क्षेत्रों में विकसित है। बिना आज़ादी संभव नहीं है। परमाणु ऊर्जा में समृद्ध देशों में भारत एक है। आज हम ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स जैसे खेलों में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, हम मुक्त हैं। हाँ, हम आज़ाद हैं। हालांकि हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होना है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि भूल न जाना भारत माता के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हंसकर हुए कुर्बान। आज़ादी की खुशियाँ मनाकर, आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो शपथ ये कि बनाएंगे देश भारत को महान, कि बनाएंगे देश भारत को महान। जय हिंद, जय भारत। Wow, what a heart-touching message. Now I would like to call upon Mamta Miss to share a message. A very good morning to everyone. Respected father, sisters, teachers and my dear students. First of all, I would like to wish all of you a very happy Independence Day. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. Urging the youth of India to join the Indian National Army in the struggle for the freedom of the nation, Netaji Subhash Chandra Bose gave this slogan. This inspired thousands of young minds to sacrifice their lives for their motherland. Today, we are celebrating the 75th year of independence due to the struggles and the sacrifices made by great national leaders like Pandit Jawaharlal Nehru, Netaji Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Chandrasekhar Azad and many more. This day is really a great national event, as on this day we got freedom after 2 centuries of slavery under the British colony. We must always cherish the freedom, but also remember the sacrifices that were made for it.
India has shown phenomenal growth since its independence. India has witnessed growth in various sectors like science, technology, agriculture. But yet there is a lot to be achieved, a lot to be done. On this day, flag hoisting is done in schools, colleges and offices. We must always see that the flag that we raise should never be let down. The freedom which we have today is the gift of the sacrifices, the struggles, the sleepless nights and the brutal tortures faced by our forefathers. So today we should promise our nation to free it from the problems like poverty, unemployment, corruption, etc. As righteously said by Gandhiji, you must be the change you wish to see in the nation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Wow, what a heart-touching message. Now I would like to call upon Jyot Buj to perform an amazing dance. देखो सबसे बड़ी हम मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का जो किसी के भी आगे झुका नहीं हाँ मैं हूँ उस देश का तू बैठ के ले नजारा इस ट्रैबल और बेस का सीधा चलूं या चलूं ढाई चाल मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं जब के पकड़ झाड़ दूंगा तुझको मैं उखाड़ दूंगा जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा मुझे कोई परवाह नहीं तुमको मैं दिखाऊं मुझे कोई परवाह नहीं माँ ही मेरा रब है मेरी माँ ही मेरा पीर मेरी माँ के पैरों के अलावा कोई दरगाह नहीं नाचूंगा मुझको फितूर है नाचूंगा दिल मजबूर है आज की शाम मेरी माँ के है नाम मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है नाचना जरूर है मुझे नाचना जरूर है माँ मुझे नाचना जरूर है माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है रंग केसर शूरा वालिया रंग सब्ज खिली फुलकारियां ओ रंग चिट्टा नीयत साफ दा ओ रंग तीनों to call upon my friends to dedicate a group song.
Respected principal, sister, teachers, and my dear schoolmate, it is an obligation of humankind to express gratitude for everything that he is enjoying. So, the event which was planned and attributed hard work, it became so important to express sincere gratitude for all who became a part of our event. I would start with thanksgiving. First of all, I would like to thank our Reverend Father Joby to allow us to carry out such a beautiful event. Without them, it wouldn't be possible. Thanks to the sisters and teachers, they coordinate and arrange each and everything. They became the backbone of the event. I would like to thank them from my bottom of my heart on behalf of all the students. Thank to the participants who showed their talent, showed their skill in front of the audience. It took a long time and they bear the pain to become perfect in their talent, in their skill, and make this event a beautiful and extraordinary event. Thanks to the people who are watching our video. They motivate us, they encourage us to upload more and more videos. Lastly, I would like to thank all people who became directly or indirectly a part of our program and make this event a prosperous and beautiful event.